हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द लर्नर्स नर्सिंग क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बिलोंगिंग टू गायनी एंड ऑब्स्टेटिक्स फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स, फॉर द final paper when we write fourth year, and for MSc exams like that we write, and for even for multiple choice questions for NORSET, for railways and all these entrance and competitive exams, they ask multiple choice question out of these, and even the long answers coming from these topics. So let us start. First, I will tell you what is gynae. Gynae is a branch which deals with the reproductive organ, female reproductive organ, and obstetrics is a field which deals with the pregnancy, like whenever there is anything related to childbirth. Now, coming to the topic in gynae, see, family planning methods of family planning are very important. In family planning, there must be temporary family planning methods. Then there will be permanent family planning methods. So in that there are so many important topics like intrauterine devices, copper T, contraceptive methods like mala D, mala and condom, and other gynae important topic is fibroid uterus, and in gynae onco important topic is CS cervix, which is a very very important topic. Now coming to infertility, now polycystic ovarian disease, polycystic ovarian syndrome, and pelvic inflammatory disease is one of the important topics. Now coming to the menstrual cycle related to topic, इसमें कभी भी कोई detailed question नहीं आता है, but you should know the definition, like what is amenorrhea, what is dysmenorrhea, what is oligomenorrhea. So you should broadly know what these topics are, like what this word mean. So that is very important. Now coming to the early pregnancy disorders, early pregnancy, what are the problems in the early pregnancy, like abortion, what are the types of abortion, ectopic pregnancy, now what type of ectopic pregnancy it is, then hyperemesis gravidarum, hyatidiform mole, though these all are very important topics from early pregnancy. Now coming to the disorders in the pregnancy, सी प्रेगनेंसी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, देन कमिंग टू प्री एक्लेम्शिया, eclampsia, what is gestational diabetes, like pregnancy में जब डायबिटीज़ डायग्नोज होता है तो gestational diabetes, RH isoimmunization and ABO incompatibility, जब मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है एंड शी इज़ कैरिंग अ पॉजिटिव बेबी, first delivery and second delivery again if she is pregnant and then we do not know the status, so we are supposed to there are some antibodies rising in the body which can be harmful to the fetus. So these all things are there which we should know, RH isoimmunization and ABO compatibility. Disorders of amniotic fluids में polyhydramnios and oligohydramnios, these word means polyhydramnios means poly means more, when the amniotic fluid is more. Now when will be the amniotic fluid more? When the fetus is not swallowing the amniotic fluid. So the baby is not swallowing the amniotic fluid, and that is why the liquor is increasing in number and it is not being reabsorbed. So that is polyhydramnios. What is oligohydramnios? The fluid is less. When the fluid is less, that means या तो प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड लेस है, या तो फिर ये है कि द एलिमिनेशन ऑफ फ्लूइड इज नॉट देयर. व्हेन बेबी पासेस यूरिन, दैट इज ऑल्सो कमिंग इनटू द एमनियोटिक फ्लूइड. सो या एक जगह फ्लूइड बढ़ रहा है, एक जगह फ्लूइड कम हो रहा है. There can be other reasons also for this. So we should broadly read polyhydramnios topic और oligohydramnios topic भी पढ़ना है. देन हेमरेजिक डिसऑर्डर, लाइक हेमरेज में क्या क्या आ सकता है? एंटीपार्टम हेमरेज, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है तो उसको कहते हैं एंटीपार्टम हेमरेज. एंड प्लेसेंटा प्रीविया, व्हेन द प्लेसेंटा का लोकेशन जो होता है वो बिल्कुल ऑस के पास कौन सी डिग्री का है वो होता है, तो उसमें प्लेसेंटा प्रीविया. अब्रप्शियो प्लेसेंटा, व्हेन द प्लेसेंटा इज अपनी जगह से छूट जाता है तो उसको कहते हैं अब्रप्शियो प्लेसेंटा, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है. और अब्रप्शियो प्लेसेंटा मीन्स व्हेन द बेबी स्टिल इनसाइड एंड देयर इज अ प्लेसेंटा, वहाँ से छूट गया अपनी लोकेशन से. नाउ कमिंग टू डिसैमिनेटेड इंट्रावीनस कोएगुलोपैथी, ये बहुत ही बुरा डिसऑर्डर है, लाइक बहुत ही लाइफ बिल्कुल एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है व्हेन इफ पर्सन इज हैविंग DIC. So this is also disseminated intravenous coagulopathy is also a very very important disorder. Now coming to obstetric related disorders like preterm labor, preterm labor, then coming to normal labor. Normal labor में first stage labor, second stage labor, third stage labor, and fourth stage labor, that is an observation stage. So we should know all the three stages, and there are complications related to, सबसे important है इसमें third stage labor complication, तो वो हमें पढ़नी है. Then coming to twin pregnancy,
इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक. शोल्डर डिस्टोशिया. शोल्डर देखो, डिस्टोशिया वर्ड का मतलब होता है एबनॉर्मल इन लेबर, यूटोशिया मतलब नॉर्मल लेबर. सो जैसे ही बेबी का हेड डिलीवर हो गया और शोल्डर स्टक हो गया, दैट इज कॉल्ड एज शोल्डर डिस्टोशिया. नाउ पी आर ओ एम का मतलब होता है प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. जब जो एमनियोटिक बैग है, जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन है जिसके अंदर बेबी है, वो टाइम से पहले रप्चर हो जाता है, तो उसको कहते हैं प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. यू नो व्हेन पीआरओएम इज हैपनिंग, देयर कैन बी द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द वेजाइनल कैविटी आउटसाइड टू इनसाइड. सो दैट इज वाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज गिविंग रिस्क टू द मदर फॉर इन्फेक्शन एंड द बेबी फॉर द fetus for the infection. Then coming to intrauterine fetal death. See, intrauterine fetal death is very important topic. There can be many reasons of intrauterine fetal death. So we should read this topic also is important. Now coming to other like instrumentations, forceps delivery. When we use forceps, like वो obstetric forceps होते हैं, उनको use करते हैं for the removal of head of the baby from the vaginal cavity. तो हम we use forceps, that is called as forceps delivery. Then cesarean section. Now in cesarean section, what are the incisions used on the skin and what are the incisions used on the uterus? Very important. Then coming to dilatation and curettage, coming to dilatation and evacuation. Now another important topic is cord prolapse. Cord prolapse means cord presentation. Baby जैसे ही आपने परवेजाइनल एग्जामिनेशन किया, यू आर फीलिंग द पल्सेशन. तो पल्सेशन मतलब देर इज अ कॉर्ड प्रेजेंटेशन. और कॉर्ड प्रेजेंटेशन में क्या होता है, अगर कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाती है या कॉर्ड प्रेजेंटेशन है, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द बेबी बिकॉज द कैविटी इज सो क्लोज एंड कॉर्ड पे कंप्रेशन पड़ेगा, तो देर आर चांसेस ऑफ आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डेथ हो सकती है. तो कॉर्ड प्रोलैप्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Now coming to the injuries to the birth canal. See, in the birth canal, uterus, cervix, vagina. So what are the injuries that can happen to the birth canal? See, rupture of the uterus can happen. Then coming to the cervical tear, there can be a cervical tear. There can be vaginal lacerations. There can be first degree perineal tear, second degree, third degree. The laceration and the tear can go up to rectum. So these all injuries related to birth canal is also an important topic. Coming to this third stage complication. See, what are the third stages complication? Third stage में होता क्या है? Expulsion of the third stage is starting from the expulsion of the placenta after birth, membrane, placenta and the cord. So what are the complications? PPH हो सकता है, या फिर यूट्राइन इन्वर्जन हो सकता है, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, थर्ड डिग्री टीयर हो सकता है. तो these are third stage complications. ये we should learn this topic also. It is very important. Puparium में there are two important topics. One is puparial sepsis and one is puparial fever. So after the delivery of placenta and the afterbirth, then the fourth stage. The fourth stage is the puparial phase, in which we are supposed to monitor the patient. So puparium is the postpartum phase of the woman. And out of these, there is also one more important topic that is called as postpartum blues. इसमें जो psychological aspect of a mother is very important. See, postpartum blues means postpartum depression or postpartum psychosis. So this is also upcoming important topic for you all. Thank you so much. Like, subscribe and share.